Hello and welcome to the next episode of Open Format. इस एपिसोड में हम बात करेंगे 1931 के कास्ट सेंसस के बारे में। पूरे सेंसस के बारे में तो बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इट्स अ मैमथ सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी डिटेल्स हैं, but I'll talk about a couple of salient points here. Now, to start with, 1931 census was conducted as a part of census exercise started by the British in 1872 under the office of Lord Mayo. 1931 सेंसस को इंक्लूड करके अब तक भारत में 15 बार सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस हो चुका है. Now, 1931 census was conducted under the office of Census Commissioner of India, J.H. Hutton, and report was tabled before Harry Hague, who was member of Governor General's Executive Council. उस जमाने में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स था उसके तहत सेंसस कमिश्नर का ऑफिस was reporting to Governor General's Executive Council. We don't have to really go into it because उस टाइम पे जो executive structure था बहुत different था. And in 1935 we all of us know कि जो Government of India Act आई है उसके तहत काफ़ी changes हुए थे. So that's subject for some other day. Now, going into the census, it was a fairly large exercise considering it was conducted after 10 years, and that was a stipulated time period that after the end of every decade, the census will be conducted. A couple of important things in that census. Caste के अलावा, which I highlighted in my previous podcast, उसमें language survey हुआ और कई languages के बारे में जो है एक बहुत ही detailed report लिखी गई थी. There were several languages groups in India, starting with Austro-Asiatic, Tibeto-Burmese, Dravidian, Indo-European, and some other what they termed as unclassified languages, which included Andamanese, Burushki, and Gypsy languages. Now, Gypsy languages is an interesting find. What do we mean by the Gypsy language? Gypsy language से हम क्या समझते हैं और हिंदुस्तान में क्या मतलब Gypsy language का? That is a phenomenon which more or less we subscribe to the European countries. एक बहुत अहम इक्वेशन, बहुत अहम रिश्ता है इंडिया का, हिंदुस्तान का और जिप्सी कम्युनिटी के साथ, जिप्सी कम्युनिटी के साथ. आई एम सॉरी. नाउ, जिप्सी कम्युनिटीज जो हैं वो कौन सी हैं? आज के तारीख में जो रोमेनियन पीपल हैं, जो रोमेनियन लोग हैं, सदर्न ईस्टर्न यूरोपियन देश में बसने वाले, उनको हम जिप्सीज या कह सकते हैं कि एंशिएंट जिप्सी के तौर पे उनको रेफर किया जाता है. Interestingly, what we have found in our ethnographic studies and the study of the DNA and of course the migration of the population. Now, I've been emphasizing that to understand this country, to understand our sociology, our societies, we have to understand the migration pattern. कौन सा ग्रुप कैसे आया, कौन सा ग्रुप कहाँ बसा, कौन सी कम्युनिटी वहाँ पे उन्होंने अपना जो कह सकते हैं क्लान एस्टैब्लिश किया, जिसके बाद उनका अपना एक सोशल ऑर्डर एस्टैब्लिश हुआ, एक्सक्लूसिव सोशल ऑर्डर. हम कह सकते हैं that every clan, every migration group that has come to India or Indian subcontinent in more, relatable parlance हम कहें तो यहाँ पर बहुत तादाद में Central Asian steppes, and of course if we take into consideration the first out of Africa migration 65,000 years ago, उनके जो descendants हैं, that has to be taken into consideration as well, so as to understand holistically the history or the ethnic history of the country. Coming back to 1931 census, and in that Gypsies group जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ. Before that, let me also just take you through कि 1931 जो census था उसमें कुछ बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ें, जो वाकया, जो घटनाएं वहाँ पे हुई थी. 20 लाख लोगों ने 1931 सेंसस में काम किया, डेटा कलेक्ट किया ऑल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पॉपुलेशन का, जिसमें बर्मा भी इंक्लूडेड था. सो व्हेनेवर वी स्टडी 1931 सेंसस, और फॉर दैट मैटर एनी सेंसस कंडक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया टाइम्स, दे हैव इंक्लूडेड बर्मा एज वेल. उसको हमें अलग रखना होगा, विच इज़ व्हाई आई एम बीइंग वेरी केयरफुल व्हेनेवर आई टॉक अबाउट the ethnic groups. I'm not including the Burmese groups here, except the language, which is a larger tree called Tibeto-Burmese language.
एक कमाल की बात ये थी कि उस ज़माने में जो सेंट्रल इंडियन प्रोविंस है वहाँ पे जो बस्तर स्टेट है वहाँ पे जो लोकल सेंसस अधिकारी थे उनकी जीप पर एक शेर ने हमला कर दिया था. A tiger attacked their jeep, but the radiator was too hot for a tiger to actually charge ahead, and the tiger, I mean, he withdrew. So these are small snippets which are also included or written down or penned down by J.H. Hutton's team. Interestingly, a call was also given by the All India Congress Committee or the AICC in January 1931 to boycott the census exercise. ये भी वहाँ नोट किया गया है because AICC या कहें the Congress that was leading our independence struggle and they were the ones which were also giving call of civil disobedience under the aegis of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi की जो स्ट्रैटेजी रही थी सिविल डिसोबीडियंस की आगे जाके बहुत ज़बरदस्त बहुत कारगर सिद्ध हुई जिसके बाद जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है ये आप सब लोग जानते हैं. मूविंग फॉरवर्ड या कहें गोइंग बैक टू जिप्सी जो मैंने आपको बात बताई थी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग ग्रुप एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी फॉर द जिप्सीज. जिप्सीज कौन हैं? आजकल की तारीख में हम देखते हैं कि जिप्सीज जो है रोमेनियन लोग जो हैं यूरोप में सदर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री रोमानिया उनके लोगों को हम जिप्सीज कहते हैं. इनका भारत से या कहें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से क्या रिश्ता है? वेल हिस्टोरिकली एथनोग्राफिकली Roma people, Gypsy people are the ones which have direct links from the migration of a small group of Punjabi speaking community long time ago. उनका जो लैंग्वेज सिंटैक्स है इफ़ यू कंपेयर विद पंजाबी एंड रोमेनियन बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी. पंजाबी भाषा में जब हम काउंटिंग करते हैं एक दूजा तीन ये रोमा में रोमानियन लैंग्वेज में इसको कहा जाता है येक दोए त्रेन. इसी तरीके से अख आइज कन कान नक नोज पंजाबी का बिकम्स अख नक कन इन रोमानियन लैंग्वेज. ऐसा क्यों है? कैसे पॉसिबल है ऐसा? कहाँ पंजाब और कहाँ रोमानिया? वेल they share a common ancestry of a community which migrated nearly 1500 years ago. एक यहीं सेटल रहा इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट आई मीन एंड वन ग्रुप मूव टुवर्ड्स द यूरोपियन साइड. Of course, their migration must have taken lots of years, many years, and then after those exchange with certain local communities, whichever parts of world they ventured, the syntax of the language and community must have changed. And of course, they may have been other DNA intermingling as well. Why it's important? It's important not just because of 1931 census. It's also important to once again reiterate that we, Indian subcontinent people, are mix of lot of migration movement. जैसे कि जो गड़िया लोहार कम्युनिटी है जो बंजारा मार्केट में आपको देखने को मिलेगी अगर आप दिल्ली में हैं या गुड़गांव में हैं और इवन इफ यू विजिट Gurgaon, Banjara market's extremely popular. They sell artifacts, iron artifacts, wooden artifacts. They have amazing pottery. They have extremely skilled artisans over there, and lots of the products adorn our households today. So clearly, if you go there, interact with them, speak with them, learn about them. This is only way you will get to know about how these ethnic groups evolved here, how they came here. आज की तारीख में जो गड़िया लोहार कम्युनिटी है जो बंजारास हैं दे कैन बी फाउंड largely in central India, parts of Rajasthan, Punjab, Haryana. They are migratory community, and of course parts below Deccan as well. They keep on migrating. They are endogamous, and they keep on migrating with the families and herds. Similarly, जो पाकिस्तान है उसके भी ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न पाकिस्तान साइड में जैसे कि नरोवाल और लाहौर, कसूर, भावलपुर, रहीम यार खान एंड देन गोइंग डाउन टू सिंध वहाँ पे आपको जो है यू विल फाइंड दीज एंडोगेमस migratory Banjara community. Either they are in trade or they are in music, into entertainment. They're extremely talented. They are amazing artists. Please go and speak with them. Try learning the culture. You will find a couple of very interesting insights from them. And this is what
you'll find in every community, every sub-community, every ethnic community which populates Indian subcontinent today, that keeps on reiterating that we are mix or we are result of several migrations, groups and communities and clans which came here. Some of us have characteristics of possibly one clan than the other, and some may be having characteristics of the other clan than the one. So clearly, this is what binds us, this is diversity. Now, this was a very important part, which is why I thought in 1931 census, of course, it was on the footnote of their linguistic table, but I thought it's worth sharing. So I hope you like this episode. Please subscribe, keep following, and please give me feedback for more such informative videos. Let me know what you like, and if you have any questions, I'll be happy to answer them. Thanks for watching this episode. See you soon. Goodbye.